Yes. So good evening all once again. So hope you people have been practice with the last concepts what we have been discussed in the last session. So what was the last concept? So if we get back to that. Creating business page on Facebook. Yes. So we have been started with the Facebook marketing, and we have seen that what was the difference between the Facebook profile and the Facebook. Okay. So some people are finding it difficulty in listening to my voice. Is that everyone are able to hear me? Is there any Yes, I can hear disturbance? you. Okay, okay. So, Request you to add Hindi to please. sure, sure, sir. Thank you, sir. Yeah. Yes. Did we talk about how to create with the post in the Facebook? So in the last class, I'll share my screen. So hope everyone have understood that without the personal profile of your Facebook, बिना आपके Facebook के personal profile, आप Facebook business page नहीं खोल सकता है. So you have to have a personal Facebook account. Then only it will allow you to create a Facebook business account. So once you are going to create this business account, you can be able to get logged in through your Facebook account by going to the main screen of your Facebook account. On the left hand side, you will be able to find option as pages. आपके left side की तरफ से pages के नाम से कोई option रहेगा. नहीं तो on the top right, you will be having the menu option. मेनू के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिखाएगा पेजेस करके. नहीं तो आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट के नीचे पेज पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं. So you can be able to click on this pages option so that it will list out all the business pages. So there is no limitation. Why I've been listed many of the business pages is, so there is no limitation in the Facebook that you are supposed to create only this many pages. So you can be able to create n number of pages, but do not create multiple pages for the same businesses so that it will be confusion to your audiences. So आप बहुत सारे पेजेस को क्रिएट करके आप सभी में एक्टिव नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगा. सो सभी में एक्टिव रहेगा तो कौन से पेज को फॉलो करना पड़ेगा. सो ऐसे डाउट आपके ऑडियंस के ऊपर रहेगा. So better you can have only one preferred business page so that you can be able to keep on doing the activities on that particular page. So the very important part of your Facebook is you are going to create a profile, so where it will talk about your business. आपके profile picture, आपके cover picture, so वो दोनों भी आपको फिल करना पड़ेगा क्योंकि जब भी कोई भी आपके पेज को चेक करने के लिए पहले आपके बिजनेस पेज के लोगो के ऊपर ही डिसाइड करेंगे ये क्या हो सकता है. दैट इज लाइक एन इन्विटेशन. Then once they are coming inside the page, so how you are going to talk about your business, what is your views, so what is that expectations they can be able to have it on your business page. So that is what you are going to keep it with your images. So आपको आपके प्रोफाइल पिक्चर और आपके कवर इमेज
दोनों को भी आपको फिलअप करना रखना चाहिए। और इसके साथ में आपके सभी डिटेल्स, आपके बिजनेस के सब डिटेल्स को आप एडिट पेज इन्फो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एडिट पेज इन्फो के ऊपर जाके सब कुछ डिटेल्स को आपको एंटर करना पड़ेगा। Then there is an option called username. So this has to be filled as a kind of other name of your page, or the identical name of your page, or it could be a brand name. Okay, so let me take it as Lokesh Raj Ad Agency. So जो कुछ भी मेरा ब्रांड का नेम है वही नाम यहाँ पे दे सकता हूँ, नहीं तो आप थोड़ा शॉर्ट करके भी दे सकते हैं। ये इस नाम यूजर नेम, it is going to help you out to get connected with the people. So for example, you might be seeing it. So whenever the posts are being added, so it will be connected with their tags. So at the rate, so and so person. So you can be able to tag it by using the usernames, like how you are going to use it in your Instagram or on the WhatsApp. So it's the same thing over here also. You're going to create a username for your business page. So once I give the name and click anywhere outside, and if that username, if it has not been, लोगों ने क्लेरिफाई नहीं किया ना, if it's 5 then 5 is fixed. yes sir, हम वही ना assumption पे नहीं चल सकते. They should have ideally called that. okay, I think it was something else. Fine, so we'll go ahead. So username, you can be able to give anything with an identical name of your business. So either it could be a brand name, or it could be a short name of your business page, or anything which you feel it that the name, whatever you are going to give, it is going to represent your business. Okay, and once you are going to add this name, आप username enter करके कहीं और जगह पे आप क्लिक किया तो वहां पे कोई भी एरर नहीं दिखा है तो वो नाम वो सेव किया हुआ है और ये रिपीटेड नाम नहीं है. So it's an unique name. Okay, so once you are being done with that, and if you have been entered with all the necessary details on all your profile, so complete this. So profile, it should be completed. Do not keep it empty. Okay, so once after doing all this, you can click on your business page name so that you will be there on the home page of your business page. You can see that below to your name, that username, it will be listed out. And in case if you have not done any kind of activities, you are not completed your business page information, then it will not allow you to create the usernames. So this is very important part. Okay, so make sure that you are going to add all the necessary information about your business page. It is like our profile information. It's like our CV you are giving. So business, what is this business is all about? So that curiosity you are going to create it, the identity you are going to bring it. So with these images and its information. Then next, we have been seeing that how we can be able to create the post on a different ways. So we can be able to create with a normal post, or with an event post, nor with an offer post. You can be able to try with any of these options by adding the images and by giving the contact details. The next thing is the same information I can be able to add it when we have been logged in into Business Suite, Meta Business Suite. It is a page of Facebook itself, but here it will talk about only the business page. It will not connect to your personal profile. So that if anyone is not interested, आपको सिर्फ आपके फेसबुक के बिजनेस पेज में ही आपका डेटा को आपको एंटर करना चाहिए, आपके पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, तो आप डायरेक्टली business.facebook.com पे क्लिक करके आप यहाँ पे आपके फेसबुक लॉगिन को लॉगिन कर सकते हैं और आपके बिजनेस पेज को सेलेक्ट करके उसमें से आप एक्टिविटीज को शुरू कर सकते हैं. So the same features you will be having it with more options.
So यहाँ पे भी आप create post पे click कर सकते हैं और आपके post को post कर सकते हैं. So for example, we have been done with a post. So there is the Sir, yes, go ahead. like we have created our business page, but Yeah. till the time I send the invite to the people, Yeah, they will not be able to see yes, my yes, business page yes. So it or is any like post. yes. So until and unless you are not invited the people, the post it will remain on your page. It will not reach to the people. Okay. Okay. So by defaultly, if it has to reach out to your people, it should be invited. Second thing is, if you want to reach this information to your audiences, so then you are supposed to boost the post. I think we have seen in the last class how you can be able to boost your post. Okay. So it will list out all your posts, whatever the activities you have been done. So it is going to be listed out over here. Just below the screen, if you scroll down, यहाँ पे आपका जो कुछ भी एक्टिविटीज किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा. Okay, so you can be able to see your insights. आपने पोस्ट किया और उस पे एंटर करके आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आपकी पोस्ट को देखा है. They have viewed it. How many of them have been reacted? How many of them have commented? How many of them have been shared? So like this, you can be able to see the performance of your particular post. And if you want to reach it to the more people, so you can be able to start to boost the post. So this is one way of getting connected to the people. The next thing is, so if you want to reach it out for more people, you can be able to create the ads. So for creating the ads, you can be able to go on the left hand side. So if you people are able to see my screen, on the left hand side below to the home button, you have a lot of options. In that you can be able to choose with the option called ads. So you can click over here as an ads and you can be able to choose it. So what kind of ads do you want to create it? So let me click on all ads and click on create ad. So when you click on create ad, you will be given with multiple options. So what is the purpose of creating the ads? आप ads किसके लिए intention क्या goal है आपका इस ad से आप पहुंचना चाहेंगे? So is it you want a more leads or is it that you want to boost a particular post or do you want to promote your complete business page? Yeah, reaching out your business page to the local business locally, that is nearby regions, or do you want more people to get contact to you, that is making calls to you, or do you want the people to visit your website? क्या आप इस फेसबुक एड के तरफ से आपके वेबसाइट विजिटर्स को ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे? तो आप यहाँ पे गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, or do you want the people to get connected through the messenger? So you can be able to choose what is your goal, what is the intention of creating this ad, what is that finally you are looking for, the output. So you can be able to choose any one of this. So when you are going to choose it, any one of this option, for example, I want to get more people to my website. So let me click on this. So example, I'm taking this. So you can be able to see that what are the options are available for this same. So by default, it will take whatever the description you have been given on your business page.
जब आप इस बिजनेस पेज को क्रिएट करने के टाइम पे जो भी आपने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, सो वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द डिस्क्रिप्शन and you can be able to see the picture. By default it has taken the cover page, so if you want to use the same cover image you can use it, otherwise you can be able to change it by clicking on select media. Then you have an option that what should be the headline. यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपके headline क्या होना चाहिए, so you can be able to change it. The next thing is what is the call to action button. By default it has taken as apply now. You can be able to click over here and you can be able to choose it with the given options. So let me check it out. Yes, you have this many options. So what is that option do you want to give it to your audience? So you can be able to select one of this button. So let me choose it for example as sign up. So then I am supposed to give it with the link, so that if anyone clicks on sign up के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में कौन से लिंक के पेज को ओपन करना चाहिए ताकि आपके ऑडियंस का डिटेल्स आप कलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन बी एबल टू मेक यूज ऑफ दैट गूगल शीट आल्सो, द गूगल फॉर्म also. That link you can be able to give it over here so that you can be able to collect your data. Okay, so you can start to collect the data from here, and after collecting the email IDs you can be able to send the mails to those people. So this is how you are going to get connected. जो भी यहाँ पे आप लीड फॉर्म्स के लिंक आप देंगे उसके तरफ से जो कुछ भी ईमेल आईडीज मिलेगा उस ईमेल आईडीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं. So this is how you are going to generate the leads for your business. Okay, so the next thing is, so it is asking us to give the URL. Let me try to give the Google Forms link. Okay, so I'll just copy this and I'll give it over here. And on the right hand side, you can be able to see that what could be the cost for your ad, what you want to run it as of now. So it is estimated daily results that with the value of 459 rupees or 460 rupees nearly, so you can be able to reach out to 357 people to 1K, 1000 people on daily basis. And let me check it out how many days it has been scheduled. It has been scheduled with minimum of 5 days. So if I run it lesser than this, so it says minimum you have to run it for 4 days. So not less than. So why it is 4 days? 4 दिन ही क्यों है? तो आप 4 दिन आप continuously आप आपके ads को दिखाई देंगे तो it will be more beneficial. People, the visibility of your page, it will be there for more time. So people can be able to easily recognize, yes, this was the information which I'm getting. So at least they people will be trying to get connected after seeing 2 or 3 days. So this is an survey, what it has been done and it has been worked out. Okay, so try to follow with the recommendation what it has been provided. Yeah, hope my voice is audible to everyone. Yeah, it's audible now. Yes. Yes, sir. Fine. So we were talking about how we can be able to do with the
ads on the Facebook. So when you are going to choose it, the ad on the Facebook, आपको minimum 4 दिन आपको लेना पड़ेगा. जो कुछ भी recommendations दिया हुआ है उस particular platform पे, so try to implement that. So don't try it going with lesser pay or with a lesser period of time. So it may be having a kind of recognizable visibility. You can be able to get it when you're going to follow with that process. So the next thing is, yeah. So whom to reach this ad, so that you are supposed to choose it. So I have been listed लास्ट क्लास में भी मैंने एक ऑडियंस टाइप ऑफ लिस्ट क्रिएट किया था, वो जून 2022 का कैंपेन लिस्ट. सो यहाँ पे क्लिक कर लिया तो जो कुछ भी मैंने उस ऑडियंस लिस्ट को क्रिएट किया था वही पर्टिकुलर ऑडियंस को मैं दोबारा से हमारा कैंपेन या हमारा एड्स को रीच कर सकता हूँ. Otherwise, you can be able to edit the same thing or you can create one more list. So as many lists you can be able to create it, but be very particular with your type of audience to whom to reach this content. So if you are clear with that, it will be easy to the Facebook or any social media platforms to whom do you want to target, so that it will be easy for your visibility for them. So the more and more time you are going to connect to those people, so it is more and more you are going to get the visibility, more and more recommendations you can be able to get with it. Okay, so you can be able to use it the same list, or you can be able to create of your own by clicking on create new. So as of now, let me choose it with the same audience details which have been created in the previous session. Okay, so I am chosen with. So you can see that you can be able to reach minimum of 412 people on everyday basis to maximum up to 1.2K. And there is chance of engagement. Link clicks means engagement. So 20 to 59 audience can be expected to click on your links. Okay. Can we So, create the list here also, sir? List in the sense, ma'am, like on what kind of list? Like you have earlier you have created that list जो आप दिखा रहे हैं June 22 वाला. हाँ, ये Audience. आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे ऑडियंस लिस्ट को भी आप क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएट व्यू पे गया तो आपको ऑप्शंस दिखाई देगा. आपके ऑडियंस टाइप का नेम, कौन सा लिस्ट का नाम आप दे सकते हैं. और आ रहे 2 मिनट आ रहे खाना. So you can be able to choose with what kind of people do you want to target it. If your ad is very specific to the certain type of people, and it is not the same people whom you are targeting, in such instances you can be able to create a new audience list. Okay, sir. Okay, thank you. Yes. Lokesh, sir. Yeah, go ahead, ma'am. In case if we do not opt for this boost option, does Facebook also, I guess, we can even search for certain kind of things that we want even on Facebook, if I'm right? Like suppose I'm looking for some advertising agencies. So what is the likelihood that my page would come up if somebody is searching for that? See, again, it is going to depend upon the keyword what you are going to use it, ma'am. So you should be able to know about those keywords which are commonly used by your audience types. So in the next class, we are going to talk about the keyword research. So which are the types of keywords it is better to use it for what kind of a product which will help you out to get the audiences. Your information will be on the top priorities. Okay. Okay. Yes. So now what we are doing it. So boost posting and the ad
what we are creating, it is almost similar type of option what you are going to get it. And if you have been observed, when we were doing with boost post, आपने boost post करने के टाइम पे आपके few of the options यहाँ पे जो दिखा दे रहा है वहां पे नहीं था. So उनमें से you can be able to see with your own description of your business and image changing, we can be able to do it, and with the headline changing. Then important thing is you can be able to place your ad only on the Facebook page screens, but here when you're going to create as an ad, you can be able to connect your ad on all these placements. You can run your ad on the Facebook platform, and you can be able to run your page with your Instagram account, and also it can be run on Messenger. So Messenger, it is there by default. So Instagram also you can be able to connect it. Okay. So then finally you are supposed to see that अभी जो कुछ भी आपने डिटेल्स दिया हुआ है वो सही है. आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके कार्ड का डिटेल्स दिया के आप यहाँ पे प्रमोट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं. Immediately it will start to run with an ad. So you can see that ad, it is going to show you it as sponsored. So any post, if you are seeing it with the word as sponsored, that means it is going to be ad. Okay. And here you can also see that if you click on this drop down button, schedule option rahega. So everyone knows that schedule means for the future time. So अभी आपके सब कंटेंट को रेडी रख के आप पर्टिकुलर टाइम पे इसको आप पोस्ट करना चाहेंगे, प्रमोट करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. Okay, so this option you don't get it on the boost post option, so that it is available only when you're going to create the ads. Okay, so this is one way of creating the ad on the Facebook. Is that everyone are clear till here? What we have seen with how to create the business page and how to connect it the business.facebook.com page, and how to create the post and how to create the ad. So type it as yes. मेटा सूट के अलावा हाँ. मेटा सूट के अलावा हम पोस्ट बूस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं आपके नॉर्मल फेसबुक अकाउंट पे भी, यानी आपके फेसबुक बिजनेस पेज अकाउंट को ओपन करके facebook.com पे जाके आपके पेजेस को ओपन करके यहाँ पे आपको बूस्ट पोस्ट करके ऑप्शन क्या रहेगा सर दोनों में? सर आपको ऑप्शंस आपको डिफरेंस रहेगा. यहाँ पे देखिए बूस्ट पोस्ट, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. So you can make the difference with the option. See, boost post means immediately you have to post it, whereas you don't get that schedule option. Okay, so this is one option, and you can see that you can be able to post नहीं, this. इसमें सर ऊपर डेट था ना, डेट भी तो था ना, तो उसमें मतलब शेड्यूल कर सकते हैं ना अपने. हाँ, इसको भी स्टार्ट आप डेट हम मान लो लेट्स से एग्जांपल 10 जून कर देते हैं, और yes फिर you बूस्ट can कर देंगे तो 10 जून को ऑटोमेटिक हो जाएगा ना. 10 जून से आपको शुरू कर देगा, और यहाँ पे टाइमिंग को भी आप दे सकते हैं शेड्यूल. तो वो डिफरेंस नहीं हुआ ना अभी, मतलब मेटा से और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है फिलहाल. हाँ, वो एक ऑप्शन है. और इसके अलावा आपके प्लेसमेंट्स आपको सिर्फ फेसबुक के अंदर आपको दिखाई देगा, वहां पे आपको इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर सकते हैं. Okay, so there are few of the options. And both are paid. Both are same, so you don't find it that much of changes. So there is a difference of few of the options. And one more thing here is you are going to be, see, now if I want to come out of this page, so I have to close this account. So I have to come to the home page.
and then again I have to come to the main screen of my Facebook. That is my personal profile. And the next thing is I have to go to the pages. So it may be like it is going to be taken little bit of more time comparatively, and few of the options you may be get better than the normal Facebook page. So you can say that कि मेटा सूट अगर हमें लॉगिन करना है तो उसके लिए पर्सनल प्रोफाइल लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, पर्सनल प्रोफाइल को लॉगिन करना जरूरी नहीं है। आपके पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू आपने बिजनेस पेज पहले क्रिएट किया हुआ है तो डायरेक्टली आप business.facebook.com पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड पर्सनल का रहेगा या किसका रहेगा? पर्सनली रहेगा। सो लॉगिन आईडी तो आप दूसरे नया वाला तो नहीं क्रिएट करेंगे, सिर्फ उसमें से एक पेज को नया सा क्रिएट करेंगे। लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स वही रहेगा। Yeah, got it. Okay. Okay. Yeah. Fine, sir. Yes. Yes. So this is how you can be able to create with the ads. So यहाँ पे ads करके ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप किस तरह का ads क्रिएट करना चाहिए, what is your goal, आपके इंटेंशन क्या है, what is your returns expectation, उसके हिसाब से आप ads को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा और एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक के अंदर जिसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेगा जब आप एड्स को क्रिएट करेंगे। वो ऑप्शन देखने के लिए यू हैव टू गो फॉर ऑल टूल्स, और यहाँ पे एडवर्टाइज के नीचे ऑप्शन मिलेगा एड्स मैनेजर। सो इट विल टेक यू टू अनदर स्क्रीन ऑफ Facebook Ads Manager screen. अभी तक हमने जो भी ऑप्शंस देखा है, सो इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको एड्स को क्रिएट करना चाहिए तो वो ऑप्शंस आप अभी तक आपने देखा है उसी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड्स मैनेजर पे जाके आप क्रिएट करेंगे तो आपको ज्यादा का ज्यादा ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपको पूछ देगा व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग द कैंपेन और एड ऑन योर फेसबुक। यहाँ पे आपके 3 कैटेगरीज रहेगा, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्शन। सो ब्रांड अवेयरनेस, सो आपको डिटेल्स आपको देखना चाहेंगे ये किस तरह का ऑब्जेक्टिव है, इसको सेलेक्ट करने से मेरे को क्या फायदा होगा, व्हाट काइंड ऑफ expectations we can be able to expect it from this particular objective. You can click on this information, so it will show your ads to the people who are most likely to remember them. So you are creating an awareness of your brand. This is to the reach of people. You want to bring your information to the lot of people. You are not worried whether it is going to give you a sales, whether they are going to get converted or not. It is only your intention is to reach your business information to the crowd. Or consideration. Consideration, the first option is traffic. In case if you want more people to come to your website. एक बार repeat करेंगे awareness वाला please. So brand awareness, it is going to be helpful to bring your ad to the people, to your targeted people. It will be keep on showing, popping up to them on their business page. It is going to just give an information, this is the business type, this is the product. मतलब इसमें call to action button नहीं होगा? Call to action button भी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा it is not going to make you to connect to any of your other pages a lot. So it is not going to ask you to do the sales. It is going to say that you just go with the information. So you are just creating the awareness. Okay, fine. So the traffic means you are going to make the people to get connected to your website, or you are going to connect it to your app. So you are going to drive the traffic from Facebook to other places.
So if in that case, you can choose with the traffic. Then engagement. So get connected. So give your details. Then app installs. If you have been promoting only your app, then if you want to promote your videos, if you want to collect the leads, so your lead generation form, kind of any app, if you are using it, so you can connect with that. Then if you want to connect the people to the messengers, Facebook Messenger, you can choose this option. Then if your intention is to make the conversion, so the first one was awareness. This is the consideration that is driving a traffic towards to the other platforms. The conversions is finally I want to make the sales. So catalog sales, you can be able to bring up a lot of images in the same ad. Then store traffic, if you want to drive traffic towards your store, आपका कोई भी दुकान रहेगा तो आपके ट्रैफिक जो भी यहाँ पे फेसबुक के एड्स देखेंगे उन लोगों को आपकी स्टोर के तरफ से डाइवर्ट करना चाहेंगे तो you can choose it with store traffic. So you can choose it what kind of objective do you want to run it. So in case if you are going to start with a business, so you have started your marketing your business, social media के तरफ से आप market करना शुरू कर दिया तो then you can be able to start with awareness, bringing awareness of your services or your product or the brand. So try to go with brand awareness. So let's see what are the options we may have it. So whenever you are going to try with each and every option so that it may be giving you one or two options of difference compared to the other goal. So let me choose this brand awareness. Then click on continue. So you can be able to see the name of your campaign. If you want to change it, by default, it will take it as a brand awareness. If you want to change it, you can change it. Otherwise, you can go. So we can choose only one option here. At the time, you have to use it only one. So if I choose any other option, so it is going to choose only one option. Okay. So let me click on continue. So here you can be able to see there are three steps when you are going to create a campaign or an ad. So the first one is the campaign settings. The second step it will be on creating the ad set, and the third step is creating the ads. So we will see that one by one. What are the informations we are going to add it on? Three different steps. लोकेश जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आपके साथ साथ आप जो बता रहे हो उसमें मैं करते जा रहा हूँ तो थोड़ा सा एक बार अपने इंस्ट्रक्शन के साथ चलेंगे तो इफ यू डोंट माइंड. फाइन सर, कैन यू टेल मी वेयर यू आर देयर? अभी आप कौन से स्क्रीन पे आप? मतलब मैं बेसिक पेज पे ही हूँ, मैंने इमेज बना रखा है, मेरे को जो बूस्ट करना है वो तो बस अभी आप मुझे जैसा बताएंगे उस हिसाब से कैंपेन नेम से स्टार्ट कर देंगे. ओके, तो आप एड्स आपने मेटा बिजनेस सूट को ओपन किया हुआ है सर? हाँ एक सेकंड, नहीं मैंने जो पेज खोला है तो उसमें मैंने पेज खोल लिया बट उसमें मेटा सूट भी नहीं दिख रहा है मेरे को. ओके, आई विल डू वन. हाँ मेटा में ही हूँ, राइट सॉरी मैं मेटा में ही हूँ. आप मेटा पे है ना? यस. ओके, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप जो कुछ भी ऑप्शंस आपको ऊपर से नीचे दिखा रहा है वहां पे इनसाइट्स करके दिख रहा है और उसके नीचे ऑल टूल्स करके दिखा रहा है सर. हाँ इनसाइट्स और ऑल टूल्स है. ऑल टूल्स पे क्लिक कर दीजिए और उसमें से एडवर्टाइज पे ऑप्शंस मिलेगा, उसके नीचे एड्स मैनेजर, हाँ उस पे क्लिक कीजिए. यस एड्स मैनेजर पे आ गया मैं. तो जैसे वहां पे क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा. राइट. और उसमें से आपको क्रिएट ऐड करके एक ग्रीन कलर बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए. यस या ओके कर लिया मैंने. हाँ, अभी जो है ना मेरा जो पोस्ट है उसमें क्या बोलते हैं, मुझे अवेयरनेस के साथ साथ लीड्स भी जनरेट करने हैं. एक ही टाइम पे दो तरह का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके आप नहीं क्रिएट कर सकते.
आप पहले ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करके उसके एक ऐड को रन करना पड़ेगा। ओके, और इसके साथ में आपको वो गूगल फॉर्म की तरफ से तरह का एक फॉर्म को भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आपके पर्टिकुलरली आप लीड जनरेशन करना चाहेंगे तो इसके बाद में और एक ऐड क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप लीड जनरेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने ब्रांड अवेयरनेस पे मैंने क्लिक कर लिया, अभी हाँ। कंटिन्यू कर दूं? हाँ, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए नीचे यहाँ। नीचे कैंपेन नेम और वो सब दिख रहा है, उसमें कुछ भी नहीं भरना है ना? नहीं नेम नहीं और नहीं, कैंपेन। नो नीड नो नीड, यू ठीक कैन है, जस्ट। ठीक है, मैंने कंटिन्यू कर दिया। आपको ऐसे ही आपको पेज दिखा रहे थे। यस, एग्जैक्टली आ गया सेम पेज। ठीक है सर, यहाँ पे आपने कैंपेन नेम वहां पे चेंज नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपेन नेम करके है, सो जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव इट एज जून 2022 ऑफर। मुझे जो नाम रखना है वो रख दूं ना? हाँ, जो कुछ भी आप नाम देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। ठीक है। यस, फाइन। सो आप नाम देने के बाद में यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरीज में कुछ मत लीजिए। सो इट इज ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफिक, आप वहां पे देख सकते हैं। आप कोई भी इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के ऊपर आप ऐड क्रिएट कर रहा है तो आप यहाँ पे वो परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो अभी कुछ भी मत सेलेक्ट कीजिए, वहां पे जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। नो कैटेगरीज डिक्लेयर्ड। ठीक है। सो उसके बाद What में about नेक्स्ट, या what about that create template जो ऊपर ही था कैंपेन नेम के बराबर में? नहीं, यहाँ पे आप पहले से ही आपने नाम दिया हुआ है तो वही नाम से आप हर बार आप क्रिएट करना चाहेंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने ऑडियंस लिस्ट का नाम दिया था ना, वैसे ही कैंपेन नेम को दे सकते हैं। सो यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट, इट इज गोइंग टू गेट सेव्ड ऑटोमेटिक। So click on next. So the next thing is add set name. So यहाँ पे भी आप एक नाम दे सकते हैं। So let me choose it as आपने yeah. एक सेकंड, हाँ सर, मैंने लीड जनरेशन सिलेक्ट किया तो अभी मुझे चेंज आ रहा है, मतलब आप अभी अपने ब्रांड हाँ। अवेयरनेस वाला कर रहे हैं? हाँ सर, ठीक आप है, पहले तो इसको मैं फॉलो करके देख लीजिए, उसके बाद में ठीक है, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यस चलेगा। यस। Okay, I've just given this name with my ad set name. So scroll down. Here you can be able to choose it. इस एड रन करने के लिए आपका बजट कितना है? यहाँ पे बजट दो तरह का होता है। एक तो डेली बजट, दैट इज आर यू रेडी टू स्पेंड द मनी ऑन द डेली बेसिस, और डू यू वांट टू सेलेक्ट इट एज लाइफ टाइम बजट, यानी आपको पर्टिकुलर पीरियड कंटिन्यूसली आपको एड को रन करना चाहिए और उसके लिए आप कितना बजट रखेंगे। डेली बजट ऑन एवरीडे बेसिस, लाइफ टाइम बजट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। So if you people are observing that when I'm going to choose it as daily budget, here the end date it is optional. यहाँ पे it is not mandatory to specify that when you want to end it. So every day I want to run my ad. So let it be keep on running it on every day and I'm ready to spend at 400 rupees. Okay. So this is when you are going to choose it with daily budget. आपने daily budget को select कर लिया तो end date it is not mandatory. But जब आप lifetime budget को select कर दिया तो it is mandatorily you are to supposed to give it that you have to run it from the particular date, starting date, and till that particular date of end. So by default यहाँ पे 18,000 करके लिया हुआ है, तो आप
आपके हिसाब से कितना आप स्पेंड करने के लिए चाहेंगे वो अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्राइंग टू गिव इट एज 1000, so it says that you have to have a minimum budget, so it is like you are bidding, so your ad has to be bidded minimum with rupees 2338 rupees. Okay, so you have to go with this minimum value. Above this only we are supposed to go with it. Okay, because the period what it is taken by default day, it is taken for 1 month. So let me choose it, for example, from the 9th June onwards till 8th July. So this is 1 month. So for this period, I should spend it minimum of 2,260 rupees 55 paise. So if I give it as example 3,000, so you can be able to see that it is going to show that what could be your reach on estimated daily results. On the right hand side आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने रीच बन सकते हैं आपने जो कुछ भी बजट दिया हुआ है उसके हिसाब से. So minimum 716 people can be able to. Sir, your voice is fluctuating, I guess. Sir, your voice is fluctuating. I guess internet problem or what, I don't know. Okay, I'll just recheck it. Yeah, is that now it is okay, sir? Then now it's okay, but let's see. Okay, I'll take one more chance. Yeah, it's okay now. But Sir, on my window, the next option button is not coming. I am creating this ad with you, but that next button is not reflecting. Only the close button is reflecting on my screen. Okay, are you there on the same screen, ma'am? Like, have you given any Yes, details yes. similar to me? Yes, this right hand side things are not reflecting on my screen. It is white. Okay, is it giving any error on the left hand side? Any red color no. box? No error as such. Okay, can you refresh this that page? ऊपर वहां पे आपको refresh button है ना, जहाँ पे आपका link जो दिखा दे रहा है, वहां Yes, पे sir. आप refresh करके एक बार check करके देखिए ना. Okay, it's working now. Now it's Done. working. Yes, sir. Okay, that's good. Fine. So you have to be prepared with what the budget you want to go with and what is the period you want to run with. And you can see that what could be the estimated daily results. So this is the minimum what it can be able to reach your ad, and this is the maximum up to that you can be able to reach with. Okay, so then click on show more options. कहीं पे भी आप ads पे run करने के time पे जब आप ads को create करेंगे वहां पे आपको show more option. So click on more settings. So any options if you are going to get it. So click on those so that you will be able to find certain options which may be very useful to you. यहाँ पे जब मैं click more options पे click किया तो यहाँ पे मेरे को option मिला है ad scheduling. So that means I can be able to schedule my ad, what time to run it with my ad. यहाँ पे आप क्लिक सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से दिन कौन से टाइम पे आपको एड रन करना पड़ेगा. So you can be able to select it. For example, my ad on Monday, I don't want to run it.
So I'll be choosing it from the option as, yeah, let me choose it from this time to this time. Sir, I am unable to get this option. Sir, you didn't get this option? No. Okay, just go just below to the budget, sir. वहां पे आपको Yes. end हाँ, date मैंने के लिए, शो मोर भी किया. Yes. हाँ, यहाँ पे शो एड मोर शेड्यूल ऑप्शन दिखा रहा है ना, हाँ. वहां पे एडिट करके आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा, देखिए एक पेन की तरह. ओके, गॉट इट. हाँ एक्चुअली मैंने लाइफ टाइम सिलेक्ट नहीं किया, उसके लिए मेरे को याद है. हाँ, ठीक है. यस. ओके. तो मतलब अगर हम डेली बजट करते हैं तो उसमें हमें टाइमिंग का ऑप्शन नहीं आता है कि हमें कौन से नहीं, टाइम पे रन करना yeah, so it is all depend upon that recommended timing. So whatever the Facebook is going to recommend, it will run it on that particular timing. So here you can be able to manually, you can be able to give a suggestion to your Facebook. ठीक है. मैं मतलब ये बाद में शायद मैं भूल जाऊंगा, मैं अभी पूछ लेता हूँ कि अगर हम इसको ये लाइफ टाइम पे अभी रन करते हैं और 24 घंटे बाद हमें लगता है कि हमें लाइफ टाइम पे नहीं और इसमें रन करना है डेली बजट पे, तो हम एडिट कर सकते हैं क्या? आप एडिट कर सकते हैं, जितना भी वो खर्चा किया हुआ है उस अमाउंट को, वो आपके क्रेडिट कार्ड के या कोई भी अकाउंट से आप लिंक किया हुआ है, उसमें से वो निकाल के ही आप कर सकते हैं. यानी आप दोबारा से आपको स्टॉप करके दोबारा से आपको नया सा ऐड क्रिएट करना पड़ेगा. नहीं, नया नहीं, उसी में एडिट नहीं होगा क्या? नहीं, जब वो शुरू होता है तो आप एडिट करेंगे तो वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब रहेगा. स्टॉप कर दीजिए, उस ऐड को स्टॉप कर दीजिए, दोबारा से आप मींस की जो रनिंग ऐड है उसको हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, जो करंट ऐड है उसको हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते कभी भी? आप कर सकते हैं. यानी आप अभी एक दिन का आपने 10 दिन का दे दिया हुआ है, उसमें से एक दिन का वो रन हो गया है, ठीक है. So before you are running it for the second day, so if you are going to do the changes on the end of the day, so you can be able to edit it. Okay, if you are doing it on the mid of the period, so 10 दिन के अंदर आपने 5 दिन कर दिया है, तो उस टाइम पे आप स्टॉप करके दोबारा से नया से क्रिएट कर लिया, तो आपका जो कुछ भी बजट है वो रीअरेंज हो जाएगा. Okay. So always it is suggested, stop it and restart it. Recreate the ad. Okay. Okay. Fine, sir. ठीक है, समझ गया. So you can be able to choose with the days, timings. आपको जो कुछ भी टाइम आप सेलेक्ट करना चाहेंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. नहीं तो आप हर दिन एवरी डे फिक्स टाइम पे आपको रन करना चाहेंगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन रहेगा एवरीडे, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. लेट्स अज्यूम इट दैट यू वांट टू रन इट फ्रॉम मॉर्निंग 10 to this particular days, so you can select it for all the days same timing. यहाँ पे एवरीडे पे क्लिक करने के बाद and if you want to remove, click on that selected area, so it is going to get removed. So like this, you can be able to remove. Okay, so you can be able to choose like this. The next thing is audience list. So audience list, I think we have been seen in the previous ad screen also. Let's see here what kind of options we are going to get it. यहाँ पे भी आप एक नया लिस्ट बना सकते हैं, नहीं तो आप पहले से ही किया हुआ है तो आप यहाँ पे लिस्ट पे सेलेक्ट कर सकते हैं. Okay, so let me choose it as a create new. So custom audience, यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं from where do you want to get this audience list. आपके वेबसाइट विजिटर्स में कैसे कैसे लोग वहां पे पहुंचते हैं, उसके हिसाब से आप करना चाहेंगे तो यू कैन बी एबल टू सेलेक्ट इट फ्रॉम द वेबसाइट सोर्स. So
You can be able to choose with other options also when you have been run with any your previous ad, you have been connected with your Instagram account. तो उसमें से जिस तरह का ऑडियंस आपको मिलेंगे, उन लोगों को टारगेट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमें सर ये Yes, sir. वेबसाइट ऐप एक्टिविटी उसमें क्या डिफरेंस है? सर आपके एक बार वापस क्रिएट नहीं खोलिए ना प्लीज। हाँ ये जो है वेबसाइट ऐप एक्टिविटी, कैटलॉग, कस्टमर लिस्ट और ऑफलाइन एक्टिविटी, मतलब ये हाँ। मैंने जो देखा तो उसमें मल्टीपल सिलेक्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? नहीं, अभी आपके वेबसाइट के अंदर आपके ऑडियंस लोग जो भी वहां पे विजिट करता है, किस तरह का ऑडियंसेस आप वहां पे मिलेंगे। सो कौन से एज पे, कौन से कंट्री, कौन से जेंडर्स, सो वो डेमोग्राफिक हिसाब से आपको डेटाबेस वहां से कलेक्ट करके आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो फेसबुक में एक पिक्सल करके एक टूल है जिसमें से आप आपके वेबसाइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट can be connected to your Facebook account so that Facebook can be able to analyze it, what kind of people are visiting your website. Okay, so based on that databases, the data sources, so you can be able to reach your ads to those people also. और मेटा सोर्सेस में क्या होगा सर कि ये मतलब जो वीडियो देख रहे हैं उनको मिलेगा या फिर जो इंस्टाग्राम अकाउंट यूज कर रहे हैं उनको दिखेगा, क्या होगा सर? नहीं, उस ऑडियंस लोगों को हमारा एड उन लोगों को दिखाई देगा। सी, इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने के लिए फेसबुक अकाउंट का जरूरत है, राइट। सो जो लोग हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को कांटेक्ट कर रहा है और देख रहा है, फॉलो कर रहा नहीं है। सर, इंस्टाग्राम के लिए फेसबुक अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, इंस्टाग्राम ऐसे ही हम अलग से खोल सकते हैं। वो पहले था, अभी ये तो इंटरकनेक्टेड नहीं, है। अभी सर मैंने 3 दिन पहले एक अकाउंट खोला एक ब्रांड का, तो वो अलग से खोल सकते हैं सर। जो कुछ भी आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको ऑडियंस जो होता है ना, वो डेटाबेसेस फेसबुक के थ्रू पे ही वो मिल सकता है। वो डेटा सोर्स इंस्टाग्राम से ले सकता है। करेंगे राइट, बट सर वो तो हम लिंक करेंगे प्रोफाइल तो ही होगा ना सर, लिंक नहीं करेंगे, सेपरेट रखेंगे तो वो अलग ही रहेगा ना। इट इज इंटरनली इट इज गोइंग टू गेट सेव्ड। इंस्टाग्राम को जो कुछ भी डेटाबेसेस रहेगा वो फेसबुक में ही सेव करेगा सर। मेटा इज वन प्लेटफॉर्म वेयर इट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द 3 अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ओके, आपका जो भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर रहा है, उन लोगों को भी आपका एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को भी दिखा दे सकते हैं। Okay, so this is one way of creating the audiences. Then other way is like how we were being able to see the last audience list. वहां पे हमने select किया था किस location, so we were being able to select with the location wise, age wise, gender wise, and the different types of audiences based on the demographic base. So यहाँ पे आप specify कर सकते हैं कौन से location से आपको आपके ऑडियंस को टारगेट करना चाहेंगे। whether are you going to target all the people all over the India, or do you want to target any specific region of that particular region. So for example, मैं अभी पूरा कर्नाटका, so I can be able to choose this, and if I want to, मेरे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। आप वहां पे एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए सर, वहां पे ऑडियंस के नीचे, ऑडियंस के बट ये नीचे डेली बजट में आएगा ना ये ऑप्शन, उससे तो लेना देना नहीं है इसका। नहीं, आप थोड़ा नीचे आइए, वहां पे ऑडियंस करके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, क्रिएट अ फेसबुक पेज कस्टम ऑडियंस। हाँ नहीं, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस के अलावा आपको ऑडियंस के नीचे क्रिएट न्यू ऑडियंस करके वहां पे दिखा रहा है सर।
हाँ, हाँ कस्टम ऑडियंस ना, हाँ, कस्टम ऑडियंस करके दिखा क्रिएट रहा न्यू है। में जैसे हम कस्टम ऑडियंस नहीं, उसमें गए तो क्रिएट कस्टम न्यू पे ऑडियंस मत कीजिए, क्रिएट न्यू ठीक पे है, मत क्लिक कीजिए, वहां से आप ओके, यहाँ पे ऑडियंस करके आपको ठीक हेडिंग है, दिखाया लुक जाए। लाइक ऑडियंस आ गया और उसमें कस्टम ऑडियंस आ गया। आपको ऐसे ऑप्शंस तो नहीं दिखा रहा है ना? नहीं, ये हाँ, ये आ गया, ये वाला ऑप्शन आ गया, हाँ, यहाँ क्रिएट पे। न्यू हाँ ऑडियंस, यूज सेव्ड ऑडियंस, और फिर नीचे सर्च बार में है हाँ, कस्टम ऑडियंस। ठीक है, उसके उसके नीचे जो कुछ भी है क्रिएट न्यू ऑडियंस के नीचे आपको वहां पे ऑडियंस का डिटेल्स दिखाया दे रहा है ना, एज, लोकेशन। क्रिएट न्यू ऑडियंस के नीचे सर, हेलो सर, हेलो। जी, हाँ सर, ऑडियंस के नीचे जो आपको क्रिएट न्यू ऑडियंस का ऑप्शन है उसके नीचे आपको वहां पे लिस्ट दिखा दे रहा है। नहीं सर, लिस्ट नहीं आ रहा है कोई, ऑल लोकल लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस तीन आ रहा है। क्रिएट न्यू ऑडियंस के नीचे हाँ, उसमें कोई लिस्ट नहीं आ रहा है। एक मिनट, Sir, in my this screen is showing no existing audience in this account. If I'm clicking हाँ, lookalike audience, ओके then एग्जैक्टली, it's showing no existing audience. ओके, Where to find audience actually? वेट अ मोमेंट, सी हाँ, नाउ, बस यहाँ पे बस ये वाला पेज आ रहा है। हाँ यही आपको दिखा दे रहा है। यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस के नीचे सेटिंग्स करके है, ओके, सिर्फ सेटिंग्स राइट है, करके है। हाँ है, हाँ, वहां पे आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए सर। ओके 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 ओके, ओके अभी आपको मिला होगा। हाँ मैम, सॉरी, जी। आप दोबारा से बताएंगे? हाँ, मैम को भी शायद सेम ही इश्यू था। हाँ, वो दिखा रहा है no existing audience in this account. हाँ, बट अभी ये सिलेक्ट करना है ना हमें, उसके लिए वो सेव्ड ऑडियंस में आप गए होंगे। सो यू कैन बी एबल टू सी द क्रिएट न्यू ऑडियंस, उसके नीचे आपको सेटिंग्स करके दिखा दे रहा मैम। यस, Search existing audience. हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है आ गया। हाँ, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, किस लोकेशन को आप टारगेट करना चाहेंगे। ओके, सो लेट मी टेक इट गुरुग्राम। So I am able to select this. So the selected audience, it is going to be, it is going to show that balloon kind of a pin. Then उसके बाद में आपका जो कुछ भी रेंजेस है, रीजन को सेलेक्ट करना चाहेंगे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिस्ट देगा। और जिसको भी आप सेलेक्ट करना नहीं चाहेंगे, यानी आपको उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट नहीं करना चाहिए, ऐसा रहेगा तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड लिस्ट में लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको रेड कलर में आपको पॉइंट आउट करेगा। Okay, then next, if you want to select it with multiple locations at one shot, यहाँ पे add locations in bulk करके एक ऑप्शन है, उस पे से क्लिक करके आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं कौन कौन सा और इसमें लोकेशन। हम सिर्फ सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं या उसके डीप में भी जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर, मतलब जैसे कि कोई भी सिटी हम सिलेक्ट करें या फिर उसके अंदर का हाँ, एरिया या तो जो भी हम गुरुग्राम इट इज अ सिटी, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा, सो आई हैव बीन गिवन, यहाँ पे वो सिलेक्ट किया हुआ है, देखिए। ओके, तो उसमें अच्छा, उसमें
ये जो मी है MI, मतलब वो क्या है, उसके आसपास का किलोमीटर्स है या? So we can be able to change this, the radius. यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं. लाइक आई एम डूइंग फ्रॉम UAE, तो UAE में सिर्फ एक दुबई नहीं करके फुल UAE भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं. आप ट्राई करके देख लीजिए, वहां पे लिख के देख लीजिए. तो मुझे यहाँ किलोमीटर नहीं आ रहा है, MI आ रहा है, मतलब माइल्स आ रहा है, उसको मुझे चेंज करना है तो? आप यहाँ पे क्लिक कीजिए. माइल्स आप कौन सा लोकेशन को सिलेक्ट किया हुआ है सर? गुजरात। गुजरात. So let me check it out. नहीं सर, ऊपर जो है ना उसी में दिक्कत है, वो जो माइल्स आ रहा है। यहाँ पे हाँ, ये जो आपको गुरुग्राम के पास में आया ना 40 किलोमीटर, हाँ हाँ हाँ. वहां पे मेरे को माइल्स आ रहा है। ओके, यहाँ पे वो तो आपको सेटिंग्स पे चेक करना चाहिए. वो आपको अलग से वो सेपरेट ऑप्शंस रहेगा, वहीं पे क्लिक कर दिया तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है क्या सर? सो किलोमीटर और माइल्स नहीं दोनों सर, ऑप्शन आपको दिखाई देगा. दिखाई देना चाहिए बट नहीं दिख रहा है सर। सो समटाइम्स द आपके फेसबुक अकाउंट के पेज इन्फो स्क्रीन पे आपने कंट्री को नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, कोई दूसरे कंट्री को सिलेक्ट किया हुआ है, तो अपार्ट नहीं आउट किया ऑफ हुआ है सर, ये इससे आउट एवरी ऑफ वीक इंडिया. मेरी टीम एक हाँ हाँ हाँ. ऐड करती है, बट ठीक है चलो, वो उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट ओके, ठीक है। मैं अभी फाइन, यू कैन ये सेलेक्ट जो द आपको 3 लोकेशंस. लोकेशन दिख रहा है, ये जो आपके अंदर 3 लोकेशन दिख रहा है, इंडिया, गुरुग्राम और क्या था एक सेकंड, ओके गुजरात। कर्नाटका. अभी या मुझे उसमें ऐड करना है। मैं हाँ सर्च ऑप्शन में गया, मैंने अहमदाबाद डाला, हाँ हाँ ठीक है, और अच्छा दूसरा भी वहीं से डाल सकते हैं। हाँ सर. आप गॉट जितना गॉट आपको इट। रीजन को सेलेक्ट करना चाहिए, आप सेलेक्ट कर सकते हैं. Okay, then what is your targeted audience comes under which age? एज के हिसाब से आपको टारगेट करना चाहेंगे, आप यहाँ पे उसको भी आप दे सकते हैं. और जेंडर के ऊपर पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. इज दैट योर सर्विसेज और योर प्रोडक्ट और ब्रांड, आप जो कुछ भी ऐड दे रहे हैं वो किस पर्टिकुलर जेंडर को आप टारगेट कर रहे हैं, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज डिटेल टारगेटिंग. यहाँ पे आपको किस तरह का कैटेगराइज्ड ऑडियंस को आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, वहां पे एडिट पे जाके ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए. ब्राउज के ऊपर क्लिक किया तो आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेगा: डेमोग्राफिक बेसिस, इंटरेस्ट बेसिस एंड बिहेवियर बेसिस. क्या आप लोगों को मिल रहा है ये ऑप्शंस? यस सर, मिल रहा है। या नहीं मैडम, नहीं हाँ मिल रहा है सर, उसमें ब्राउज, यस मिल रहा है सर, मिल रहा है, हाँ, मिल रहा है ब्राउज के सर। ऊपर क्लिक किया तो आपको मिलेगा. मैम या आपको मिला है? या ओके, सो विल गो विद दिस. सो आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक मत कीजिए. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको एरो मार्क दिखा दे रहा है छोटा सा, उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको सब ऑप्शंस मिलेंगे. ओके इस सब ऑप्शंस में आपको चूज कर सकते हैं आपके ऑडियंस किस कैटेगरी पे मिलते हैं. क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कुछ भी आप ऐड देना चाहेंगे, वो ऐड पर्टिकुलरली किस तरह का कैटेगरी के ऑडियंस को आपको दिखाया देना चाहिए. So you can be able to choose with it based on the educational status, based on their financial status, life events के हिसाब से, parental status के हिसाब से, relationship, और based on their work nature. So who is your primary target? आप यहाँ पे select कर सकते हैं. और इसके ऊपर आप क्लिक किया तो आप उसके अंदर जो कुछ भी सब ऑप्शंस रहेगा, उस सब ऑप्शंस को आप देख सकते हैं.
सर हम तीनों में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैंने बिजनेस एंड फाइनेंस करके जो कैटेगरी है उस पे क्लिक करने से पहले ही मेरे को दिखाई देगा, आपको राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं द साइज, यानी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कितना ऑडियंस साइज को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड फाइनेंस के कैटेगरी के अंदर आई कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 59,30,926 people. So I can be able to choose out with multiple. आपको सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही कैटेगरी को सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग सा कैटेगरीज पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड बी श्योर दैट हु इज योर द टारगेट। आप जैसे आप देखेंगे, इसको भी हम दिखाना देना चाहिए, उसको भी। So you should be very peculiar with that, what kind of audience do you want to reach with. आप यहाँ पे select कर लीजिए, because you are paying the money for it, for that reason. सर मुझे एक दिक्कत आ रही है, मैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पे आपको टिक मार्क दिखाई दे रहा है सर, राइट हैंड साइड पे। हाँ, बट एम्प्लॉयर्स में टिक मार्क नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर होता है क्या? नहीं, बिजनेस एम्प्लॉयर्स एंड पे इंडस्ट्री यहाँ में पे आप, हाँ, एम्प्लॉयर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट मी चूज इट एज, नहीं, आप बिजनेस एंड वो सिलेक्ट करिए ना सर प्लीज। एक सेकंड, इंटरेस्ट में बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंटरेस्ट में है ना, हाँ इंटरेस्ट में पहले ऑप्शन है ना, हाँ, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। हाँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक किया आपने। हाँ, अभी इसमें एम्प्लॉयर पे जाइए, एम्प्लॉयर नीचे आएगा, आ ही नहीं रहा है आपको वर्क, उसमें वर्क में, सॉरी वर्क में एम्प्लॉयर्स। हाँ, यहाँ पे है ना डेमोग्राफिक्स के अंदर, वर्क के इंटरेस्ट अंदर, में वर्क, नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर है वो वर्क, यानी वो डेमोग्राफिक्स के अंदर है। हाँ, डेमोग्राफिक्स में वर्क में और एम्प्लॉयर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर कंपनी के लोगों को आप टारगेट करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, एक्सेंचर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मतलब मैन्युअल मुझे कंपनी का नाम लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। यस। Okay, so choose your audience. Whom do you want to target it? Sir, in this मतलब way, इसमें वही कंपनी दिखाएगी। बोल लीजिए मैडम आप। Yes ma'am, go ahead. अगर हम ये कंपनी का नाम लिखते तो by default the ad will be posted to all the employees of that company. Yes. It will reach to those people who have been shared their profile in that they have been added this company in their profile. Okay. Yeah. हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे। हाँ सर, कंपनी कौन सी दिखाएगा इनके अंदर, जो कॉर्पोरेट्स, कौन से कॉर्पोरेट्स इसके अंदर दिखाएगा? आपको पर्सनली आपको मेंशन करना पड़ेगा सर, वहां पे लिस्ट नहीं करके दिखाएगा। नहीं, मैं समझ गया, मतलब कोई लिस्टेड कंपनी दिखाएगी या फिर एमएससी, एसएमई, एमएसएमई दिखाएगी, या मतलब ये कौन से डेटाबेस से लेगी, ऐसा कुछ अपने को अभी उन जो भी उनके प्रोफाइल के अंदर एम्प्लॉयर्स करके उनके वर्क डिटेल्स जिसमें दिखाई देगा, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन उनके एम्प्लॉयर का नाम जो कुछ भी एंटर करेंगे, उस लिस्ट के ऊपर जो भी दूसरे कौन सा भी प्रोफाइल लोग उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिखेंगे, उनका सेपरेट का लिस्ट बनाएंगे सर। अभी आपने आपके प्रोफाइल के अंदर आपके वर्क
जो कुछ भी कंपनी का नाम आपने लिखा है तो उस कंपनी के और कोई दूसरे कोई भी सब्सक्राइबर है, फेसबुक अकाउंट का सब्सक्राइबर रहेगा, वो भी वही कंपनी का नाम दिखाई देगा तो आप दोनों का एक लिस्ट बनेगा। जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनेंगे और उस कंपनी को टारगेट करेंगे तो आप दोनों को वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना सर? Okay. Yeah, fine. So we will go ahead with other things. Yeah. Fine. So this is what the audience list. Then finally, you are going to click on save this audience. जो कुछ भी आपने लिंक क्रिएट कर दिया है, वो सब कुछ आपके टारगेटेड ऑडियंस के बारे में था, उसको आप सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक कीजिए और उसके लिए एक नाम अलग सा देना पड़ेगा, आपके लिस्ट के नाम। क्या आप वहां पे सेव पे क्लिक किया हुआ है? या जस्ट अ सेकंड, एक्चुअली मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा था। ओके। ठीक है, अभी मेरे को मतलब थोड़े से और ऑडियंस ऐड करने होंगे तो मैं बाद में कर लूंगा, अभी मैं कंटिन्यू करता हूं। Do it later. Yes. So click on the save this audience. It will ask you for the name. आप जो कुछ भी नाम देना चाहेंगे लिस्ट के नाम आप दे के उसको सेव कर सकते हैं। Shall we move on, sir? Yes, please. Yeah. So the next thing is placement. Where do you want to run this ad? By default, automatic placements करके यहाँ पे लिया हुआ है, which is recommended option. But in case if you are very specific, मेरा ये ad particular इस platform पे run करना चाहता हूँ करके आप सोचेंगे तो आप यहाँ पे manual placements पे click कर सकते हैं और यहाँ पे आप choose कर सकते हैं किस devices पे, particularly on which type of devices users of Facebook को आप टारगेट करना चाहेंगे, सिर्फ मोबाइल यूजर्स को या डेस्कटॉप यूजर्स को। दोनों पे कर लिया तो आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स ले सकते हैं। सो वैसे ही आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी एडवर्टाइजमेंट्स को रन करना चाहेंगे, यू कैन बी एबल टू चूज विद दिस प्लेटफॉर्म्स विद एनी स्पेसिफिक। मैं सिर्फ फेसबुक पे ही रन करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं, then you can be able to untick this options. Okay, so you can be able to choose it and you can see that on what all the places you can be able to run it and how does it looks like. आपके जो कुछ भी एड आपने क्रिएट किया हुआ है, इस किस टाइप के स्क्रीन पे किस तरह का वो डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, मुझे इमेज डालना था बट वो अभी बाकी रह गया। इमेज हम कहाँ डालेंगे? लास्ट में आएगा या अभी तक हमने इमेज के बारे में नहीं देखा है। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, दैट्स इट। नहीं, मतलब मैं जो ऐड क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मुझे इमेज ऐड करना है। हाँ, आप कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे वो ऑप्शन मिलेगा सर। ठीक। Okay, so if you can be able to choose with any of this option if you are very specific, otherwise you can choose it as automatic placements। जहां पे भी फेसबुक का एड रन करेंगे वहां पे आपका एड दिखाई देगा ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे। तो नेक्स्ट करके क्लिक कीजिए। So here the next the screen what it is going to come as the final ad screen। अभी यहाँ पे जो कुछ भी आप देंगे, नीचे था सर शो मोर ऑप्शन था, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत है क्या? वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ब्रांड सेफ्टी एंड जो सब है उसमें? सो बाय डिफॉल्ट सर्टेन ऑप्शंस वहां पे सेलेक्ट किया हुआ है, सो इट इज ऑल रिकमेंडेड ऑप्शंस वहां पे है। सो उसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है सर। सो इसलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे डायरेक्ट जा रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पे आ गया। ये Yes. फेसबुक पेज सिलेक्ट करने को बोल रहा है। हाँ सर, आपका कर लिया मल्टीपल पेजेस रहेगा तो आप उसमें से कौन से पेज के लिए आप Got it. अभी ऐड रन करने जा रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, कर लिया। और यहाँ पे I want to ask something. या गो अहेड मैम। In this automatic placement and manual placement, which one did you say to choose? You can choose it for automatic placement. So where it is going to run the ad on all the places, whichever the recommended options are there from the Facebook, it will select it on own. Okay, it will select all Instagram and all other. Yes, yes. Okay. If you are very specific, then you can go for manual placements. Okay. Yes. Yeah. So the next thing is the ad creation. You can be able to create it for June ads. So I've just given something. The next thing is be very sure that आप कौन से Facebook पेज से आप ये ad को create करना चाहेंगे. You can be able to select it. In case if you have been connected your Instagram account with your Facebook page, you can be able to select it over here. Then ad setup, create ad. So do you want to create an ad with a single image or a video? So किस तरह का ऑप्शन को आप चूज करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए. So if it is one single image, so you can choose the first option. If it is more than 2 images, so you can choose it carousel option. So if it is kind of album kind of images you want to add it multiple, so in that case you can go for collections. So you can choose with that option. In case आपका ad के लिए separately आपने एक poster बनाया हुआ है, तो उसमें आप सिंगल इमेज को सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं. सर एक सेकंड वापस बताएंगे। सिंगल इमेज है तो मैं समझ गया वही करना है। हाँ सर. ये कोरोसेल और कलेक्शन कब करना है? तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दिया तो आपको मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा. यू कैन सी हियर ऑन द राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं. ओके, समझ गया। या और ये कलेक्शन में हाँ, ये मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे देख लीजिए. सो वो कंटिन्यूसली आपको स्लाइड शो की तरह आपको दिखाई देना चाहिए तो आप करोसल को सेलेक्ट कर सकते हैं. और करोसल में आप आपका वेबसाइट के इमेजेस को भी आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं. अच्छा, वो कैसे, मतलब वेबसाइट का लिंक यहाँ पे शेयर करना है? हाँ सर, यहाँ पे आपको पूछेगा. ठीक है। और ये कलेक्शन में क्या आएगा सर? सो कलेक्शन आप एल्बम की तरह मल्टीपल इमेजेस. तो कोरोसल में भी सेम है और इसमें भी सेम है? नहीं, करोसल में आप आपके वेबसाइट के इमेजेस को लिंक करके आप इमेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं. मिनिमम 2 इमेजेस. आपके वेबसाइट में एक लोगो रहेगा और एक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का इमेजेस रहेगा. वो मिनिमम 2 इमेजेस लेंगे. कलेक्शन का है तो इट इज अ ग्रुप. सो इट इज काइंड ऑफ मैक्सिमम कितना इमेजेस लेंगे? अप टू 10 इमेजेस. ठीक है. हाँ सर. Yeah. So you can be able to choose any of this option. So when you are very particular, so try to go with single image. Okay. Then next, so you can be able to add it. अलग अलग सा प्लेसमेंट्स आपको शेयर करना चाहिए तो उसमें से कौन सा इमेजेस को ऐड करना चाहिए वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं. अलग अलग एक्सपीरियंस देना चाहेंगे तो आप यहाँ पे एड्स के ऊपर इमेजेस को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. द नेक्स्ट थिंग इज द प्राइमरी टेक्स्ट. So what is that you want to share it as an ad? So what is that highlighting content you want to use it?
The next thing is you can be able to add it with the headline, with a short description, with a lengthier description also you can add it. It is an optional. Then आपके वेबसाइट को भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं ताकि जब भी आपके एड्स को देखेंगे तो for more details they can be able to go to your website also. It is like you are going to divert your audiences that there is a website and they can be able to get more details about your products and services. Then finally the call to action button. So you can be able to select it, whichever the button which is applicable for your ad, you can be able to choose any one of. So it is going to show it over here in the same way. Is that clear? With how do we create an ad through an ads manager? तो मुझे सिंगल इमेज करना था, वो मैंने कर दिया अभी। Okay. बस और इसके आगे और तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ सर, यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे मीडिया पे। कहाँ पे था, एक सेकंड ना सर, ये मीडिया में ही मैंने ऐड किया और मतलब ठीक और है कहीं सर। करना था क्या? नहीं, वही पे ही आपको करना पड़ेगा। और वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है, मतलब राइट साइड पे मेरे को एरर दिख रहा है, वेरीफाइंग योर चेंजेस और एंटर द वेबसाइट यूआरएल फील्ड फॉर योर एड। तो यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस आप देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं और वहां पे आप आपका वेबसाइट है क्या सर? यस यस यस, You can give that. So while giving the website address, you try to give it with the https:// अच्छा https लिखना जरूरी है क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी ले रहा है सर? ओके अभी दिख रहा है रिव्यू। यस 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 यस, It's now working. हाँ। और डिस्प्ले लिंक पूछ रहा है तो उस पे क्या आएगा सर? यहाँ पे डिस्प्ले ये जो लिंक, वेबसाइट के नीचे डिस्प्ले, यस यस। हाँ सर, ये तो आप अभी आपके यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर पेज आपके वेबसाइट के अंदर स्पेसिफिक पेज को ऐड करना चाहेंगे तो वो लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। कोई भी आपका पर्टिकुलर इमेज रहेगा आपके वेबसाइट के अंदर, उसको डायरेक्टली आप टारगेट करना चाहेंगे तो उस लिंक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो तो ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी, सो यू कैन लिव इट। ठीक है। यस और सर उसके ऊपर वापस ये जो है ना प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन, उसमें क्या आएगा? हाँ सर सर, आप यहाँ पे जो कुछ भी आपको राइट हैंड साइड पे दिखा दे रहा है ना, हाँ। आपके कंपनी के नाम के ऊपर स्पॉन्सर करके है, उसके नीचे जो कुछ भी है, ओके, हाँ प्राइमरी टेक्स्ट करके जो कुछ भी आप ओके। प्राइमरी टेक्स्ट में दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। से फॉर एग्जांपल आई जस्ट चेंज इट दिस। ओके, सो जो कुछ भी हमने दिया हुआ है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। Got it, sir. Okay, so like this you can be able to add the तो उसमें सर इसमें कोई इफेक्टिवनेस रहता है क्या कि इसमें अच्छा सा कोई कीवर्ड डालो तो सर्चेबल रहेगा, या फिर ये इतना मैटर नहीं करता है?
नहीं, आपको इसके लिए अलग सा पोस्टर आपने क्रिएट कर लिया तो वो अच्छा रहेगा सर। सॉरी, क्या क्रिएट कर लिया तो? आपने इमेज के बारे में पूछा है ना सर? नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में पूछ रहा हूँ सर। हाँ, प्राइमरी टेक्स्ट इट इज गोइंग टू गिव एन हिंट दैट व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ठीक है, मतलब वो मैं ये पूछ रहा था कि वो कीवर्ड से कोई मैटर नहीं करता है ना जरूर कि जरूर, एटलीस्ट वन कीवर्ड शुड इंक्लूड इन द प्राइमरी टेक्स्ट। ओके, आपके प्राइमरी कीवर्ड तो आपका ही कंपनी का नाम है, उसके अलावा आप चाहेंगे तो और एक कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यस ठीक है सर। yes fine, so you can be able to go ahead with this. Finally you can be able to publish this particular ad until and unless you are going to give your card details, so it is not going to get run with your ad. सर वापस एक सवाल, सर ये हाँ सर, प्राइमरी sir. टेक्स्ट के नीचे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन है, उसमें और क्या डाल सकते हैं? हाँ सर, यहाँ पे आप जो कुछ भी दिखा, आपके इमेज के नीचे जो दिख रहा है ना, हाँ हाँ वही आपको वहां पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा सर। सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, समझ गया सर, दिख रहा है, हाँ सर, सो एंटर, तो वो आप हेडलाइन कुछ, में तो कंपनी का नाम ही आएगा, मतलब अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कंपनी का नाम आ रहा है। हाँ हाँ सर, आप चाहे तो और चेंज उसमें कर भी सकते ऐड हैं। ऑप्शन है। हाँ सर, तो उसमें दूसरा वाला जो है वो नहीं दिख रहा है, मतलब फर्स्ट वाला ही दिख रहा है। हम हेडलाइन में जा रहे हैं और ओके, ऐड ऐड अनदर कर रहे हैं, मतलब उसमें तो एक ही दिख रहा है, तो एक ही डालना चाहिए या फिर दो का ऑप्शन क्यों है, मतलब और कहीं दिखेगा क्या? आप समझ गए ना सर मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, अभी आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया मास्टर हाँ। करके जो कुछ भी मैंने हेडलाइन पे लिखा हुआ है यस वो यहाँ पे यस, दिखाई अभी देगा। उसमें आप ऐड करिए, और दूसरा कुछ लिखिए, मतलब वो रहने दीजिए और एक ऐड करिए। यही यानी आप इसके साथ में और कुछ ऐड करना चाहेंगे, वो पूरा आपको नहीं हाँ दिखाई देगा। हेडलाइन इट इज यस, मैं ओनली, वही बोल रहा हूँ। या headline it is only kind of a name what you want to highlight it, आपके प्रोग्राम के नाम या आपके कैंपेन के नाम। ठीक है, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, वहां पे आप जो आप डिटेल्स बताना चाहता है वो आप वहां पे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। इधर आप प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप लिख लीजिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिखिए। हेडलाइन तो सिर्फ वो हाईलाइटेड नेम। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है ना सर? Sir, I have one question. या गो अहेड मैम। Sir, all this we are doing for our own promotion, for our, maybe for the agency, maybe for the product sale. Yes. But as a service provider, like if I'm promoting on my Facebook ID, that's okay. But as a service provider for somebody else, I need to go to it, that particular Facebook ID. Then also again we have to buy the option of posting the ads in those mail accounts, I mean Facebook accounts. See, you should be able to take the access of that account, or you have to take their login IDs and you have to do it. Yeah, if I have admin right of somebody else account, yes, and you I can am be able to do it on your own. So again, we have to buy option for creating and posting the ads in that account. Like buy the option in the sense like what kind of buying? Like here we want to publish the post, then we have to pay for that yes. post.
So you have to So give in it. all, Either you have to take your client's credit card details, or you can be able to enter your own card details, and you can charge your client later. So you can be able to show that how much it has been spent. okay, so it is account based and particular ID based. Yes, yes. So when you're going to give a credit card details, any bank details, so it will not matter either it is of this Yes. account holder or anyone's else. Yes. So it can be anyone's. It can be anyone's. Yes. Okay. Okay, fine. One more question, sir. Yeah, go ahead, ma'am. When I'm pressing this call to action button, and then there are this options in drop down menu. So I'm using this send WhatsApp message. So it is going to link with my WhatsApp account, WhatsApp number. Yeah. But then down it is saying WhatsApp information including names and phone numbers is subject to the data use restrictions in the Meta advertising policy. Yeah. Your business and ads must also comply with the WhatsApp commerce policy. Yeah. So that is just an kind of an criteria as what it is asking you to do it. So if you have a WhatsApp business account and you are linked that account with your Facebook account. So in the last class when we were creating the Facebook account, Facebook business account, so it was initially asking us to connect with our WhatsApp business account. So both the account has to be get connected. It should be integrated. So once it has been done, automatically you can be able to link this ad to the WhatsApp account. Yes. Okay. Yeah. And one more thing I wanted to ask in this above, when I don't want to add a single image, I want to add carousel. So in this, I'm not being able to select more than like one image or something like that. I mean, Yeah, just a moment. So you are being choosing with carousel. yeah. So if I choose this, then I have to choose. So if you come down, you can be able to see that select image. Okay, and then if I am choosing one image, then I'm not being able to choose another image. Why? Okay, once you are going to select it, so then it is not allowing you to select the second one immediately, Yes. right? Yes, select Yes. one, continue. So this is one image. Okay, then again add one more. Okay, so you have to you can see here, you can see the second, you can go to this edit. One by one we have to add. One by one you have to select it and you have to add it. Okay, understood. Yeah. ये तीन इमेज दिख रही है सर, मेरे को तीन ही डालने दे रहे हैं. यहाँ पे लिख रहा है कि कार्ड 1, 2 and 3 कंप्लीट द मिसिंग फील्ड है. ओके वो मिसिंग फील्ड है, मतलब हेडलाइन, डिस्प्ले लिंक एंड ऑल होगा. हाँ. ओके. Yes. Fine. Hope everyone have been understood with this, how we can be able to create the ads on the Facebook platform by using the Facebook Ads Manager. So you can be able to try it with the instant posting post, or you can be able to create the ads by using the ads option, or you can go to the Ads Manager, so where you will be able to find a lot of options and try it out with the different objectives, and then try to run it with an advertisements. So until and unless you give with the card details, it is not going to allow you to run with this advertisements. So let me close this. Okay, so now it has been drafted. It has been drafted and we have been kept it over here. So later on, if you want to change it, you can be able to change with this. सर मुझे पब्लिश करना है, तो अभी क्या मैं पब्लिश पे क्लिक कर लूं? हाँ, पब्लिश पे क्लिक करके आपके
कार्ड डिटेल्स आप दिया हुआ है तो वो ऑलरेडी एडेड है। हाँ, हाँ, वो ऑलरेडी उसको एडेड है। आप इमीडिएटली आपको रन करना चाहेंगे तो आप रन कर सकते हैं सर। ठीक है, एक बार आपको दिखा दूं क्या शेयर स्क्रीन करके? हाँ सर, यू कैन डू दैट। एक मिनट, मतलब इस टाइम अलाउज एक्चुअली 10:20। आपको शेयरिंग स्क्रीन ऑप्शन दिया हुआ है देखो। हाँ, या मैक मैक सिस्टम प्रेफरेंस सिक्योरिटी। And meanwhile, if anyone has any kind of queries, they can be able to raise it. एक्चुअली ये मैक है ना, तो मतलब मेरे को वो That's fine, sir. You do one thing. You just recreate once again and try to see with a different the objectives. आपको लीड जनरेशन में क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है और ट्रैफिक में कैसे ऑप्शंस मिल रहा है. You just have a look on all those things. So if you find it any difficulty, you can put it in the WhatsApp group so we can be able to try to solve it. Fine, sir. Okay. Lokesh Raj is host now. एक सेकंड अभी सर, एक बार Yeah, मैंने I'll कर लिया just- वो। Okay. Yeah, now you can try it. Yeah, it's getting वो shared. कुछ विजिबल ना हो सर। Yes, yes, yes. मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप एक बार। हाँ सर. ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या दिखाएगा? आपको स्टोरीज के तरह वो क्रिएट करेगा सर. मतलब यही ये इमेज को कर देगा या फिर उसके लिए अलग से करना होगा? रिमूव कस्टमाइज एसेट। तो आपको वो अलग से इमेजेस को ऐड करना पड़ेगा, वहां पे नीचे आपको दिखाई देगा. So you just go with the normal add-ons. ठीक है। Yeah. ये सब 13 प्लेसमेंट्स कैसे आ गए? मैंने तो एक ही इमेज डाली है। नहीं, आपने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स लिया हुआ था ना. ओके। हाँ, तो अलग अलग फेसबुक के ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो दिखाई देगा. या कॉन्टैक्ट अस, आपको वही देना चाहेंगे तो आप कॉन्टैक्ट अस वही देख सकते हैं. अप्लाई नाउ करने पे क्या आएगा सर? अप्लाई नाउ करने पे क्या आएगा? जनरली अप्लाई नाउ कौन सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी उनके कोर्सेस ऑफर किया तो वहां पे अप्लाई नाउ, या नहीं तो कोई भी जॉब. ओके। लैंग्वेज से तो कोई लेना देना नहीं है ना? लैंग्वेज नहीं. So if you are very specific with particular language, उसका कोई चेंज करने का जरूरत नहीं. Okay. Yes sir, it is fine. If you feel it on the right hand side, आपको वहां पे दिखा दे रहा है ना वो प्रीव्यू. आप इस पे ओके रहेंगे तो आप रन कर सकते हैं. ठीक है, समझ गया सर। Okay, fine sir. Done sir. That was Thank good you sir. so much sir. Thank you also sir.
Yes, sir. Thank you, sir. Fine. Is there anyone who has any kind of clarification you wanted? So I request everyone try with this all these features. Okay. So by this we are going to end up with Facebook marketing and with the Facebook ads. So if you try it out with any other options, so if you're finding any difficulty, please let us know. So I think can we wind up for the day? Yes, sir. Thank you all. Have a nice time. Thank you, sir.